चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ स्वागत है जी। मैं हाँ थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करने तो पहले एक नज़र मारते हैं कुछ खास हैडलाइंस ते। ब्रिटिश कोलंबिया विच कोविड-19 रिस्पॉन्स की ताज़ा जानकारी जारी। 1168 नवे केस किए गए रिपोर्ट। 6 होर नवे कोरोना मरीजों की हुई मौत। ब्रिटिश कोलंबिया सरकार वालों नौजवानों लई नौकरियां दे सुनहरी मौके। प्रीमियर दफ्तर वालों नौकरियां आर्थिक रिकवरी और नवीनीकरण लई प्रेस नोट जारी। तकनीकी खेतर वातावरण और कुदरती स्रोत खेतरों में दिते जा रहे हैं मौके। सरी सेहत निर्देशों की उलंघना करने वालों लिए बुरी खबर। उलंघना करने ते देना पवेगा $17,000 का जुर्माना। RCMP कारपोरेटर जॉनी सिद्धू ने दी जानकारी। हुण खबरां विस्तार नाल। सूबाई सेहत मंत्रालय अफसर डॉक्टर बोनी हेनरी एड्रियन डिक्स ने ब्रिटिश कोलंबिया विच कोविड-19 रिस्पॉन्स संबंधी ताज़ा जानकारी दिंदियां एक बयान जारी किया, जिस विच उन्होंने कहा कि कोरोना के 1168 नवे केसां की रिपोर्ट होने की जानकारी है, जिस तो बाद BC के केसां की कुल गिनती 1,14,870 है। सूबे विच कोविड-19 के 9,821 एक्टिव केस दर्ज किए गए। इस तो इलावा 1,03,360 व्यक्ति जिन्हां दा टेस्ट पॉजिटिव सी हुण ठीक हो चुके ने। एक्टिव केसां विचों 397 व्यक्ति कोविड-19 कारण हस्पताल विच दाखिल सन, जिन्हां विचों 120 इंटेंसिव केयर विच ने। कोविड-19 नाल संबंधित 6 नवीं मौतां होईयां ने अते ब्रिटिश कोलंबिया विच मौतां की कुल गिनती 1,521 हो गई है। हुण तक BC विच फाइजर, बायोनटेक, मोडरोना ते एस्ट्राजेनेका SIS कोविड-19 टीके दियां 11,90,832 खुराकां लगाईयां जा चुकियां ने। कोरोना महामारी ने जिथे बहुत सारे नौजवानों को अपने करियर की शुरुआत करने तो रोक दिता है, उत्थे ही ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने स्ट्रोंगर BC फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम के तहत प्रीमियर दफ्तर वालों नौकरियां, आर्थिक रिकवरी और नवीनताकारी मंत्रालय ने इस प्रेस नोट जारी किया है। यह जानकारी दिंदियां उन्हें कहा है कि BC सरकार विक्टोरिया सूबे च लगभग $45 मिलियन के स्ट्रोंगर BC फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया विच 5,000 तो वध नौजवान और नौजवान बालकों को हुनर सिखलाई और चंगी तनख्वाह वाली नौकरियां तक पहुंच प्रदान कर रहा है। इस संबंध में प्रीमियर जॉन हॉर्नर ने कहा है कि नौजवान बालकों को स्थिर चंगियां नौकरियां के मौके प्रदान करना उन्होंने जिंदगी की दिशा बदल सकता है ते ब्रिटिश कोलंबिया को मजबूती ते लचकीलापन वापस लियाउण च सहायता करता है। दस दिए कि स्ट्रोंगर BC फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम नौजवानों और नौजवान बालकों को वध रहे तकनीकी खेतर, वातावरण और कुदरती स्रोत खेतरों में सिखलाई, इंटर्नशिप, सह नौकरी और नौकरियां प्रदान करेगा। कैनेडा के मिनिस्ट्री ऑफ जॉब्स, इकनॉमिक्स, रिकवरी एंड इनोवेशन ने सर्किट ब्रेकर बिजनेस ग्रांट लिए अर्जी खोल दी है। कोविड-19 महामारी के चलदे अपने कारोबार वास्ते मदद लैण लई योग बार बीयर और वाइन तैयार करने वाली फैक्ट्रियां, जिम और फिटनेस सेंटर सर्किट ब्रेक बिजनेस रिलीफ ग्रांट लिए अपलाई कर सकते हैं। प्रभावित हुए कारोबारां नूं अपने किराए, इंश्योरेंस, कर्मचारियों दी तनख्वाहां, मुरम्मत और बिलों की अदायगी विच मदद करने लिए ग्रांट फंडिंग एक बार फिर खोल दी गई है। इस ग्रांट नाल उन्हां खर्चों को भी पूरा किया जा सकता है जो कोविड-19 बेदिशा कारण पै गए सन, जिवें कि नष्ट होने योग वस्तुओं की खरीद 30 मार्च 2021 ਨੂੰ लागू होए। प्रोवेंशियल हेल्थ ऑर्डर्स कारण प्रभावित हुए कारोबार 1,000 तो 10,000 मिलियन दरमियान ग्रांट फंडिंग लैण दे योग होणगे। सर्किट ब्रेकर बिजनेस रिलीफ ग्रांट किसी भी आकार से उन्हां सब कारोबारां लई उपलब्ध है जो 1 फरवरी 2021 तो चालू ने। योग्यता वास्ते कारोबार लई इस गल की पुष्टि करना होगा कि वह हाल ही विच लागू हुए प्रोवेंशनल हेल्थ ऑर्डर्स नाल प्रभावित हुए ने। इलैक्ट्रॉनिक्स ब्रेकिंग की जानकारी मुहैया करनी होगी। इस नाल गल की पुष्टि करनी होगी कि वह BC के कारोबार वजों रजिस्टर्ड ने। कारोबार की प्रमाणिकता लई बिजनेस लाइसेंस, लिकर लाइसेंस जिहे दस्तावेज पेश करने होंगे। नोटिस ऑफ असैसमेंट या लीज एग्रीमेंट और कारोबार की बहुगिनती मालकी और कामकाज के BC विच होने की पुष्टि करनी होगी। जिहड़े कारोबार बंद हो गए ने जां जिन्हां दे लाइसेंस PHO की उलंघना कारण रद्द कर दिए गए सन, वो कारोबार इस ग्रांट के योग नहीं होंगे। दस दे कि अर्जियां 4 जून 2021 जां ग्रांट की राशि वंड हो जाने तक खुलियां रहणगियां। प्रीमियर जॉन हॉर्नर, शीला मैक्समैनन और डॉक्टर बोनी हेनरी ने ब्रिटिश कोलंबिया विच जनतक सेहत एमरजेंसी घोषित किए जा रहे नशे नाल संबंधित ओवरडोज की 5 साला वरेगंढ के दिन कुछ अहम बयान जारी किए। ब्रिटिश कोलंबिया की विधान सभा के मैंबर शीला मैल्कसमैन ने कहा कि अज पूरे प्रांत विच हर भाईचारे के लोग गुम चुके अजीजां लई उन्हां दे दिलां विच उदासी रखते हैं। जिवें कि असीं जनतक सेहत एमरजेंसी शुरू होने तो बाद 7,000 तो वध लोकां दी ज्यादा मात्रा विच मौत दे घाट उछालिया। असीं इस गल की पुष्टि करते हैं कि असीं इस दुखांत नूं जारी नहीं रहन देवांगे।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी शुरू होने तो पहला साल 2012 तो बाद पहली बार ज्यादा मात्रा विच होईयां मौतां विच कमी आई सी। उन्होंने कहा कि दुख दी गल है कि 2020 विच साडे सूबे दे इतिहास विच पहला नालों ज्यादा लोग मर गए ने। साल 2019 विच मौतां नूं हेठां आउण तो बाद असीं जाणदे हां कि जनतक सेहत दे उपाਅ इस संकट नूं घटाउण लई काम कर सकदे ने। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालां विच अपने प्राण दे ओवरडोज नूं जवाब तेजी नाल कीता अते ओह 2021 अते इस तो अगे भी होर करनगे। सरी विच सेहत निर्देशां दी उलंघना करन वालियां ते शिकंजा कसदिआं RCMP ਵੱਲੋਂ पिछले 5 दिनां दौरान $17,000 ਦੇ जुर्माने कीते गए सन। RCMP कॉर्पोरेल जॉनी सिद्धू ने दस्सिआ है कि सरी RCMP ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਸ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ CCET ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਿਵਾਸ ਥਾਣਾ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ $2300 ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 120 ਸਟਰੀਟ ਦੇ 9400 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। इस रेस्टोरेंट के मालक नूं भी $2300 का तोहफा दिता गया। सरी RCMP की कंप्लाइंस एंड एनफोर्समेंट टीम ने सार्जेंट टाइलर विकवेयर दस्सिआ कि कोविड-19 संबंधी सेहत अधिकारियों दी हदायतां दी उलंघना करने वाले कारोबारियां अते लोकां दी गिनती वध रही है ते रुझान चंगा नहीं है। कैनेडा के इमीग्रेशन विभाग वालों अगले महीने कुछ निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिन्हां तहत 90,000 एसेंशियल वर्कर ਅਤੇ अंतरराष्ट्रीय ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कनेडा की PR हासिल कर सकणगे। यह जानकारी दिंदे इमीग्रेशन मंत्री मार्को मैंडिचिनो ने दस्सिआ कि इन्हां निर्देशां नाल कैनेडा विच पहलां रह रहे योग कामिਆਂ विद्यार्थियों को वड्डी राहत मिलेगी। उन्होंने दस्सिआ कि नवीं तब्दीलियां तहत हैल्थ केयर वर्करां ते होर योग वर्करां कोल घट्टो घट्ट 1 साल का तजर्बा होना चाहिए जिस आसरे वो PR ਲਈ अप्लाई कर सकणगे। अंतरराष्ट्रीय ग्रेजुएट ਲਈ जरूरी होगा कि उन्होंने कैनेडा विच 4 साल का पोस्ट सैकेंडरी प्रोग्राम पूरा कर लिया होवे। इस प्रोग्राम अधीन 20,000 अस्थाई हैल्थ केयर वर्कर 30,000 होर चुने जरूरी कित्तियां ते अस्थाई कामे ਅਤੇ 40,000 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी PR हासिल कर सकणगे। इस संबंधी अर्जी लैण की प्रक्रिया 6 मई तो शुरू होगी ਅਤੇ 5 नवंबर तक ਜਦੋਂ तक यह टीचा पूरा नहीं हो जाता उदों तक जारी रहेगी। पील रीजन के चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर लॉरेंस लो ਵੱਲੋਂ पब्लिक सेफ्टी मुद्दे ते गलबात की गई जिन्हां लोकां नूं पब्लिक हैल्थ दीआं हदायतां दी पालना करन लई किहा ਅਤੇ नालों नाल दस्सिआ कि कोविड की मौजूदा वैब बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड पै रही है। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस समय दो वायरेंट कम्यूनिटी विच मौजूद है इसलिए लड़ाई वैक्सीन ਅਤੇ वेरिएंट दरमियान है सो लोग सावधानियां वरतन। Now starting to see clear trends and a favorable move out of a second wave in our community. I do really want to highlight that this was thanks to the tremendous work and the collective sacrifices of our community coming together to battle this disease and recognizing that there is still much work that we have left to do together as we await the arrival of vaccines in the region of Peel. Certainly, we all know the core 4 behaviors that are intended to keep folks safe in the midst of COVID-19, to make sure that we are still maintaining our physical distance, wearing a non-medical mask where distance is not possible, trying to stay home and get tested where we're not feeling well, and of course washing our hands frequently and thoroughly wherever we might be. At this time, as our transmission rates continue to improve and our schools move to reopen after the Family Day weekend, it is even more crucial that we continue to adhere to those measures in addition to really trying to stay home as much as possible. Leaving aside the fact that February is the coldest month of the year, staying home really helps to reduce your possibility of interactions outside the home where the transmission of COVID-19. MPP दीपक आनंद ਵੱਲੋਂ स्वामी नारायण मंदिर ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। Good afternoon, everybody. It is my pleasure to be here with my brother, big brother I call it, Premier Ford, Minister Elliott, and Minister, happy birthday once again, Solicitor Jones, and my neighbor, Councillor Michael Ford. And with the members of BAPS, Swami Narayan Mandir, Naresh Bhai, Yogesh Bhai, Deepan Bhai, Deepak Ruprel Ji, Vikram Khurana, and Parag Bhai. So thank you for all the blessings and inviting us today. What a wonderful week this has been. Started with the
Last week was Easter Monday. I had the opportunity to visit church, and today is the first day of holy month of Ramadan. We have Vaisakhi today, we have a Hindu New Year today, and a Navratri. So all the blessings are coming together, and our places of worship continue to be a pillar of strength in our community throughout the pandemic. And it's heartwarming to once again see them stepping forward to protect the communities across the province. As Premier said, time and time again, the health and safety of all Ontarians has always been the province's top priority, and the vaccine will play an essential role in stopping COVID-19 and its tracks. Our government understands that not all individuals can easily travel for a vaccination appointment. That is why we are bringing vaccine closer to you, closer to home. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। I'm using my power as majority leader to make sure the Senate will vote on Senator Hirono's COVID-19 Hate Crimes Act, which my fellow New Yorker, Representative Mung, has sponsored in the House. This common sense legislation will give the Justice Department crucial tools to crack down on the wave of racist violence we have seen against the AAPI community, and I'll leave it to the sponsors to go over the details. We are open to strengthening the bill. There's an effort underway to add a bipartisan amendment sponsored by Senators Blumenthal and Moran, one a Democrat, one a Republican, as an amendment. And their bill would provide resources to state and local law enforcement to improve hate crime reporting, increase training, and establish pathways to rehabilitation. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10 ਕਾਲਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਿਊਬਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਟਵੀਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਟੋਬਕੋ 'ਚ BAPS ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BAPS ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,30,000 ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। BAPS Charities has really stepped up throughout the pandemic, donating more than 130,000 masks to communities right across this country. And their volunteers have now taken on a challenge of setting up this pop-up vaccine clinic as part of our accelerated rollout to get needles into arms in high-risk neighborhoods. As we continue to make steady progress vaccinating our seniors and most vulnerable, they're helping get vaccines to the residential and industrial neighbors here in Etobicoke, many of whom are essential workers. It's incredible, and I want to thank you again for what you're doing right here. I want to also recognize Councillor Michael Ford, who is here with us today, and thank him for his incredible work on behalf of the great people of Etobicoke North.
BAPS ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ BAPS ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। As we launch Ontario's first provincial vaccine clinic in the presence of Premier Doug Ford. In the joy of others lies our own. This motto of Pramukh Swami Maharaj, the founder of BAPS Charities, has driven the dedication and activities of the organization to serve communities around the world. We are proud to say that these motivating words continue to inspire community support even in the midst of a pandemic. Over the past 14 months, BAPS Charities has supported communities in Ontario and across Canada by donating PPE, distributing care packages, making phone calls of support, educating people through webinars, and organizing other initiatives. Most recently, in the month of March, BAPS Charities distributed more than 130,000 surgical-grade masks to families and communities across Ontario and Canada, and over 20,000 pounds of non-perishable food to food banks. During this pandemic, His Holiness Mahant Swami Maharaj, the inspirer of BAPS, has encouraged volunteers to help in local communities where possible, following the rules and guidelines of the government. BAPS has organized similar vaccine clinics in our centers in the USA, India, and England as needed. We thank the Government of Ontario for selecting BAPS Charities and to give us this opportunity to host a vaccine clinic here and serve the community. I would also like to thank the Ministry of Health for their support and applaud the volunteers of BAPS Charities who have stepped up, many taking time off from work. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੋਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ $10,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 2020 ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। I'm here today to announce more support for Alberta businesses that have been hurt by COVID-19 public health restrictions. We've been fighting this pandemic battle for over a year now. It's a battle to protect both lives and livelihoods, and one that Albertans have taken head on. By now, we all know somebody who's been affected by this disease. If not by its potentially fatal health outcomes, then certainly by its broader impact on jobs and the economy, on people's ability to put food on the table. Those of us around the cabinet table who've had to make incredibly tough decisions know that every time that action is taken to limit viral spread with public health measures, that we've had, like we had to do a week ago. ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਸਹਿ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ $45 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5,000 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। As Ravi said, young people have been disproportionately affected by COVID-19. Rites of passage like graduations, that first job, going to university with a group of people from your peer group, celebrating and exploring the wonders of young adulthood as we prepare for the challenges ahead. A year of travel, any number of things that I remember as a youth has been taken away because of COVID-19 from young people here in British Columbia. And although we have been focused for the past year and a bit on keeping all British Columbians safe and ensuring that we could keep as many livelihoods going as possible during extremely challenging times, we have seen, as Ravi said, a disproportionate impact on the most vulnerable populations in our society, whether it's the elderly, with respect to those in long-term care facilities, or young people. NDP ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰਲੀ ਐਗਜ਼ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ontario 58
ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 11 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 110 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਅਤੇ 24 ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। I am here today to talk about the attack that has been launched against public institution in Ontario. The dismantlement of Laurentian University is an act of national vandalism of the likes of which we've never seen. For people to understand how important Laurentian is, you have to really understand the 60 years that went into building that institution. It is the only public institution in the country with a mandate to support Francophone, Indigenous, and the working class Anglophone communities from the northern regions that never had access to education on the post-secondary level before. My father was a Laurentian graduate. He was never able to go to school because he was a son of a miner. He had to quit school at 16 and get a job. But Laurentian gave him an opportunity when he was an adult. He ended up becoming a professor of economics. That's not the only story. I know other people whose grandfathers worked at shifts at Inco and went to school at night and changed and became professionals. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ।